India, which works for senior citizens in the fields of research, policy, documentation, training, advocacy, and field programs. We are very happy that Ms. Almitra Patel has joined us, and I thank you, ma'am, for having introduced us to Dr. Numan so that we are having this session today. I'm happy to have with us the medical personnel who are working for an assisted living facility, Astha, which is based in Pune. And we have their nurses, their caregivers, their doctors, their admin officers who are all eagerly waiting for Dr. Numan's presentation. Before we begin, I would like to just give a token of our appreciation to Dr. Numan. We really appreciate Dr. Numan having come from Pune. He began at 6 o'clock and he's reached us in time. And without taking further time, I would be requesting him to make, he said, I'll make my own introduction. So I hand over the mic to him and let's begin our program. I welcome everyone who's joined us on Zoom as well. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm thankful to International Longevity Center, the directors, the staff for inviting me. And I'm happy that Mrs. Patel and my wife, of course, who could not make it today, and the people from abroad also are joining this. I will be speaking in English, Hindi, Marathi. Anybody, any queries, any questions are welcome at the end of the session. To a brief introduction, I come from a remote village, Uran, born and brought up in Uran, practicing for last 36 years. I was in deputation, Hajj deputation for 9 times on international levels. Uran is a place where there is a one MNC, 2 government setups, but not a single multi-speciality hospital. That is the height of 75 years of democracy. And for any emergency, we are supposed to drive down 25 kilometers. That is New Bombay. So all these slides which I'm putting, and patient slides, is totally the slides which I have treated, and maybe it is for a common man. First of all, we will start with care for bedbound elderly. अच्छा सॉरी सर्वात पहिले जे आहे हम जो है शुरू करते हैं एक बेड बाउंड एल्डरली पेशेंट क्या होता है बेड बाउंड एल्डरली मींस अ पेशेंट जिसका एज कुछ भी हो मगर वो ड्यू टू डिजीज ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम वो अपने बेड पे रहता है बेड से निकल नहीं सकता है और ऐसा है कि इट्स नॉट सीनाइल सीनाइल कुछ लोग बोलते हैं कि सीनाइल दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड और अल्जाइमर्स दे डोंट हैव मेमोरी आई विल गिव यू मैं एक ही मिसाल दूंगा आजकल का जवान का जो डायलॉग चला है मैं कौन हूं कहां हूं क्यों हूं दिस इज यू कैन से सीनाइल डायलॉग एंड बीवी को बोलने से पहले शौहर से बात करना चाहिए दिस इज अल्जाइमर्स यू कैन से आई एम जस्ट जोकिंगली आई एम सेइंग इट डॉक्टर इस्लामी बेडरिडन जो है ये वेरियस कॉम्प्लिकेशन के साथ होते हैं ड्यू एज दे आर कन्फाइंड वो अपनी जिंदगी बेड पे गुजारते हैं बेड से अगर बाहर निकले तो बहुत ही अच्छा आता है मगर हालात वैसे पैदा हो जाते हैं सब में पहली चीज जो बेड बाउंड का होता है बेड रिडन पेशेंट्स का होता है बेड सोर्स यानी जख्म urinary tract infection, recurrent urinary tract infection. Third, respiratory infection. और आखिर में skin infections. Now, next, bed sores are also known as pressure ulcers.
ये बेडसोर्स जो है ये जहां बोन निकलती है वहां पे होता है, एंड दिस इज ड्यू टू मॉइस्चर एंड बैड हाइजीन further leads to infection and complication. Moisture यानी पसीना ज्यादा है, perspiration ज्यादा हो जाए, या बैड हाइजीन हो, या पेशाब जो है उन ऐसे पेशेंट को समझता नहीं है, पेशेंट जो है वो पूरे बेड को गंदा करती है, जिसकी वजह से बेड सोर हो सकते हैं. It can be prevented by changing position, orally use of water beds or semi-fowler bed backrest, Macintosh sheet, below bed sheets so that the mattress is not soiled. ये बेड सोर्स को बचाने के लिए एयर और वाटर बेड लेते हैं, मैकिंटोश का इस्तेमाल करते हैं, या सॉफ्ट ब्लैंकेट्स एंड पिलोज ऑन की कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे करते हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं पड़ता. नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट you come here, no? Yashoda, it's not working. Next is lung infection. ये improper swallowing of food is the main cause. ये देखिए, ये सिंगल फॉलोड बेड है, और इसकी वजह से जो है बेड शीट्स जो है, सॉरी, बेड सो अवॉइड किया जा सकता है. सिंगल फॉलर मींस बेड जो ऊपर नीचे होता है, और कंप्लीट फॉलर यानी दोनों साइड का बेड जो है, यानी ऊपर का भी और नीचे का भी ऊपर नीचे होता है. सॉफ्ट ब्लैंकेट्स और पिलोज इनको कांटेक्ट पॉइंट्स पर डालते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता. नेक्स्ट, लंग इन्फेक्शन इज इम्प्रॉपर. डोंट बैक. लंग इन्फेक्शन ये जो होता है कॉमन है बेड सोर्स पेशेंट्स के लिए, बिकॉज देयर इज एन इम्प्रॉपर swallowing ऑफ फूड इन इज द मेन कॉज. वो swallowing नहीं होने की वजह से, ड्यू टू दैट द food enters the respiratory tract and leads to respiratory infections, and sometimes you need to aspiration pneumonia. However, इसको avoid कर सकते हैं semi-fowler bed से या backrest. Backrest means the position of the bed is arranged in that way. Next. ये अगर patients, if they have the swallowing difficulty, then a rice tube is put. The rice tube is passed from the nose to the stomach, and all the feeding is done through that, due to which the food doesn't enter the respiratory tract. Next. Online webinar. Next, where is it? Next, it can be avoided by oxygen concentrator when there is a difficulty in breathing. Some indicators, याने कुछ काही असे पण लक्षण असतात इन्फेक्शन साठी, लंग इन्फेक्शन साठी. रिकरेंट कफ म्हणजे कफ आफ्टर 2 to 3 वर्ड्स, दोन तीन शब्दाच्या नंतर जो आहे तो कफ करते. लो ब्लड ऑक्सिजन लेवल, जे ऑक्सीमीटर नहीं बघतात. लेवल फीवर, शैलो ब्रीदिंग, शैलो मीन्स एकदम शैलो होता है. और अगर ये सब लक्षण है तो मेडिको को कांटेक्ट करना जरूरी है. नेक्स्ट, लास्ट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. म्हणजे लघवीच्या ठिकाणी इन्फेक्शन होते. हे द रीजन इज लॉन्ग स्टैंडिंग कैथेटर इज द कॉमनेस्ट रीजन. ये बेड पे होता है, उसको लॉन्ग स्टैंडिंग कैथेटर डाला जाता है, यानी बहुत दिनों तक कैथेटर रहता है. ऐसे पेशेंट का लिक्विड इनटेक एंड डिहाइड्रेशन होता है, रिटेंशन ऑफ सम रीजन होता है. मेल्स में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, फीमेल्स में या मेल्स में कैलकुला यानी पेशाब की पथरी हो, तो उसकी वजह से भी जो है ये होता है, यूरिन जो है रुक जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. इसके लिए सब में आसान तरीका, सर्वात सोपा यह आहे की इनपुट आउटपुट चार्ट केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही पुढे दाखवतोय, इनपुट शुड बी ॲटलीस्ट 3 liters ऑफ वॉटर डेली,
अनलेस रिस्ट्रिक्शन इज एडवाइस मेडिकली। अब ये 3 लीटर कैसा करने का, क्योंकि जो पेशेंट बेड रेडी रहता है वो ऐसे ही जो है चिड़चिड़ा रहता है। 3 लीटर की बोतल या 1-1 लीटर के 3 बोतल रखने का, 24 आवर्स में 3 लीटर पानी डालने का। अगर डॉक्टर ने बोला है, इफ मेडिकल रिस्ट्रिक्शन इज देयर दैट द पेशेंट शुड हैव 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर, देन यू हैव टू गिव 800। बट इसी 3 लीटर में अगर किसी को कॉफी लेते हैं तो यू स्टोर दैट मच ऑफ वाटर, उतना पानी आप फेंक दो। फिर इनपुट शुड बी 3 liters एंड अवॉइड ड्रिंक्स दैट कंटेन्स कैफीन और अल्कोहल। अल्कोहल और कैफीन जो है वो नहीं पीना चाहिए। और यूरिन सैक जो नेक्स्ट इसमें आएगा, 2/3 जब भी फुल हो उसको मेजर करके फेंक देना चाहिए, या तो हर 3 घंटे के बाद अदर 3 तासानी लघवी फेकली पाहिजे यूरिन सॅक मध्ये। एंड रिकॉर्ड हैज टू बी केप्ट, रिकॉर्ड आईओ शीट में रखना चाहिए। नेक्स्ट, सी फोलिस कैथेटर होता है या कंडोम्स कैथेटर होता है। जब भी जो भी कैथेटर हो, जब भी उसको ये जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी ये पेशाब की जगह, लघवीचे ठिकाणे, गुरुम एंड स्किन एटलीस्ट शुड बी क्लीन्ड, म्हणजे साफ करनी चाहिए 2 मरतबा दिन में। कैथेटर रिप्लेसमेंट हमेशा 2 हफ्ते में करना चाहिए। अगर वो ब्लॉक नहीं है तो, अगर ब्लॉक है तो जब भी ब्लॉक है तो निकाल देना चाहिए। और यूरिन अगर लघवी जर कंसंट्रेटेड असते, कलर चेंज हुआ या उसके अंदर कैथेटर में यूरोसैक में स्मॉल पार्टिकल सेडिमेंट्स और पस और ब्लड हो तो कैथेटर जो है उसको चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए क्या है। या कभी कभी क्या होता है, जहां से कैथेटर डालते हैं जिकडनं कैथेटर टाकतो तिकडनं लघवीच्या ऐवजी जे आहे पस किंवा ब्लड येतो, that has to be taken. Mostly the patients of elder age, they succumb, यानी मरते हैं यूजुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से या डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन लोग समझते हैं कि नहीं वो पानी पी रहा है, और वो जो आहे वयस्कर जो तूल उम्र है वो पानी नहीं पीता, वो बस लेता और पानी इधर उधर फेंकता, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट। उन्होंने दुनिया अपने से ज्यादा देखी होती है, बात ध्यान रखो। नेक्स्ट, ये देखिए ये इनपुट आउटपुट चार्ट है। कैन यू मेक इट अ लिटिल बिगर वन? इसमें ऐसा है कि ये जो है जो इनपुट आउटपुट चार्ट ये मिलता है बाहर, या तो आप जो इसमें इनपुट कितना डालते हैं, जैसे 4 मरतबा दिन में जो है चाय पिया तो कितना, वो उसका उतना ml लिखते हैं। फिर कितना पेशाब किया वो लिखते हैं। साइड में आप देखेंगे एक्सट्रीम लाइफ पे जो है वो ये लिखा है, टाइमिंग लिखा हुआ है। और ये देखो ये फ्लूइड इनपुट है, फ्लूइड इन आउटपुट है। उसमें खाना जिधर खाता है आदमी, खाना का मतलब ये है कि ऐसे लोग असे लोक जे आहेत कधी कधी जेवत नाही, दे पेज किंवा खीर असे घेतात। दैट हैज टू ऑल्सो टू बी रिटन, एवरीथिंग हैज टू बी रिटन। और पेशेंट का नाम लिखना चाहिए। अगर हॉस्पिटल, मैंने तो मालूम पड़ा एक ने दिया और बी में लिखा और सी का और गिन रहे हैं, समझे कि नहीं? ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन या डिफिकल्ट टू पास द स्टूल, कब्जियत बोलते किंवा संडास होत नाही, पेशेंट सांगणार नहीं। पेशेंट कभी नहीं बोलेगा कि वो सिनाइल है, वो बोल नहीं सकता है, ही इज बेड रिडन। तो उसके लिए जो है ये रूल होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 बाउल्स, 3 मरतबा हफ्ते में संडास या टॉयलेट होना चाहिए। और अगर कम होता है इसका मतलब वाटर इनटेक कम है या फूड इनटेक कम है या वीकनिंग ऑफ बावल मूवमेंट से, यानी आंत की जो मूवमेंट है वो कम है मेडिसिन की वजह से, या वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। इसके लिए इसको रिलीव करने के लिए हाई फाइबर इनटेक, लैक्सेटिव और एनल सपोजिटरी दिया जाता है। हाँ, हियर वन थिंग आई विल टेल यू, इकडे मी एक व शब्द बोलीन, हे बुक मध्ये इंडियन याच्यामध्ये नाही, कारण मी गल्फला हज मध्ये होते तेव्हा बघितला हाय डिग्री फीवर अबव 106 इंजेक्शन्स नी आणि टॅब्लेट्स नाही होत, तर मग एनल सपोजिटरी द्यायचं
ॲनिमल सपोजिटरीनी मोशन साफ झालं तर फीवर ऑटोमॅटिकली खाली उतरतोय. नेक्स्ट. हा, अभी जो बेड मध्ये पेशंट आहे तो टॉयलेटला नाही जाऊ शकत, तर लेफ्टला जे आहे तो बेड साइड कमोड आहे 1 नंबर आणि 2 नंबर. आणि जो बेडवर जे आहे तो बेड कमोड थी, दॅट इज अ हँडमेड कमोड. इट इज फॉर द हैंडमेड मीन्स एक जुनी खुर्ची थी, पुरानी खुर्ची 30-40 साल पहले की, जो भंगार में मिलती है, उसको जो है होल करके पेशेंट ने जो उसके अंदर यूटेंसिल डाला है. बिकॉज यू सी कमोड ऐसा लेने जाओ 2000-4000 से नीचे नहीं मिलता. और आई एम टॉकिंग फॉर अ कॉमन मैन. आम आदमी के लिए वो भी जो है, जो छोटी कुर्सी पे अगर सुराख करके अगर यूटेंसिल डालो तो भी फायदा होता है. और बेड पैन जो है, जो लोग बिल्कुल कमोड पे से नहीं जा सकते, वो बेड पैन में टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो फैंसी लेफ्ट साइड में कमोड थी, दैट इज अवेलेबल, बट दैट इज एक्सपेंसिव. आई एम टॉकिंग अबाउट मोफिसल, मिडिल लेवल एंड हायर लेवल ऑल्सो. This has to be a, they will not understand. In fact, this is something that Ancestry has. Not everything, but You may be having this, Huh, but I'm saying that is one nice thing. Right here on Ancestry. So you think there are more people here who have than they. I'll just explain it here. Oh, no. That is another thing. Can I start? Start करू दे. They're getting on the net. The people link मध्ये. Yes, we are getting. See, a bedside commode on the see, there are 3. One is the bedside commode on the left, which is a modern. And bedside commode 1, which I have shown, is a Purana chair, and the patient has made a hole and put a utensil. That is economical, because getting a commode is expensive. Now bedpan जे आहे ते तर भेटत आहे आणि एवढा महाग पण नाही आहे. नेक्स्ट. The ideal washroom for the elderly. First, before going into the bathroom, I'll say one sponge bath daily, thorough cleaning after toileting and diaper change, and make it dry. एक बात डेली होना ही चाहिए और जो है उसको कंप्लीट ड्राई करना चाहिए. Clean bed linens to be changed swiftly, very very important. और आहिस्ता से उसको ब्लेड लिनन को चेंज करना चाहिए, ताकि उसका फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी वजह से भी ओल्ड एज में जो है बेडसोर होने के चांसेस होते हैं. बेडसोर यानी जख्म, कभी ना भरने वाले या कभी भरने वाले, या पेशेंट चला जाता है और जख्म नहीं भरते, वो अगले इसमें दिखाया जाएगा. और उसके बाद ये जो है आइडियल वॉशरूम जो होता है, इसमें ऐसा है कि वॉशरूम्स आर फिटेड विद साइड रैम्प्स. आप देख रहे हैं साइड रैम्प्स हैं, सेंसर बल्ब्स होते हैं कि पेशेंट अगर बाथरूम में जाता है तो त्याला लाइट का बटन ढूंढने की रात में जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जाने के बाद सेंसर बल्ब जो है वो लाइट चलेगा. शटर्स ओपनिंग आउटवर्ड्स, magnetic latches outwards means this side. So what happens is very easy. Suppose अगर पेशेंट स्टक अप हो और मैग्नेटिक लैच हो, तो पेशेंट का कोई भी पुकारेगा तो वो जो है निकाला जा सकता है और आसानी से वो जा सकता है. नेक्स्ट, a remote bell switch near to the elderly is an important choice. और रिमोट मिल से क्या होता है, पेशेंट को
दीवार को घंटी मारने की जरूरत नहीं, उसको पास में रिमोट बेल है, वो कर सकता है, घंटी बजा सकता है। जैसे कि वो नीचे दिया गया, सेंसर बल्ब्स ऊपर दिए गए हैं। इट इज एडवाइजेबल टू हैव साइड रेल्स ऑन द बेड। देखो सेमी फॉलर बेड अगर लोगे तो 8-10 हजार से नीचे नहीं आता। तो पेशेंट हु कैनॉट अफोर्ड, जो नहीं ले सकते, उसको बाजू में भी अगर वो एक जाली बना दे, जाली लोहे की नहीं लकड़ी की बना दे, तो पेशेंट नीचे नहीं गिरता। नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, नाउ क्लेनलीनेस। क्लेनलीनेस के लिए मैं आपको ये बता दूं कि एक 1 sponge bath daily, thorough cleaning after toileting and diaper change and make it dry। यानी जब भी नहलाओ तो पेशेंट को सूखा करो। बेड लिनन जो है, चद्दर जब बदलोगे तो ऐसा से बदलो ताकि उसके ऊपर जख्म ना गिरे, यानी पेशेंट पे। utmost care is taken। स्मॉलर सॉफ्ट चाइल्ड ब्रशिंग, छोटे ब्रश आते हैं जिससे जो है दांत घसे जा सकते हैं, ट्वाइस डेली। और डिस्पोजेबल क्लीनिंग सॉब स्पंजेस कैन बी यूज्ड। अभी यहाँ एक मेरे को किसी ने पूछा था कि डेंचर्स रहते हैं, ऐसे लोगों को, ज़ईफ लोग जो बूढ़े लोग थे, आर्टिफिशियल डेंचर रहते हैं, कंप्लीट डेंचर्स रहते हैं, तो रात में निकालने की जरूरत है क्या? तो अभी का ये है कंसेप्ट के निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्शियल है तो रात में निकालो। ये क्या उनका जो है कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप रात में डेंचर निकालोगे तो बोन वेदरिंग तो होती रहती है, जैसी एज एडवांस होती है तो वो बोन वेदरिंग कम होती है, रात में भी डाल के आप सुना। हाँ ऑफ कोर्स, जब वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है तो उसको जो है डेंचर निकालना जरूरी होता। फिर स्किन जो है स्मूथिंग लोशंस टू बी अप्लाइड। फिर एडाप्टिव क्लोज मेक्स फील कंफर्टेबल। एडाप्टिव का क्लोज का मतलब ये है कि जो पेशेंट जिसमें आराम से रहे वही जो है क्लोज डालना चाहिए। फिर उसके बाद अगर फीसिस या यूरिन बेडशीट पर लगता है तो समय पहले टिश्यू पेपर से उसको साफ कर दो, और उसके बाद शीट एक टब में 1/4 कप ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट लेकर उसको रिंस करो। रिंस करने के बाद उसका पानी निकालो ताकि वो सूखा हो जाए कदरे। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालो विद डिटर्जेंट एंड क्लोरीन ब्लीच। नेक्स्ट, फिंगर्स के बीच का जो रहता है, 2 फिंगर्स के बीच में, जिसको वेब बोलते हैं, और नेल्स, वहां पे बेड रिडन पेशेंट्स को ज्यादा इन्फेक्शन मिलते हैं। तो बेड रिडन पेशेंट्स के जो बेड ये रहता है फिंगर्स, उसको बराबर 2 कपड़ों के या जॉनसन ईयर बेड आता है, उसको लग के बीच में रख के उसको साफ करना चाहिए, उसको स्मूदर डालना चाहिए, या सिल्वर सल्फर डायजीन अगर क्रैक हो तो उसमें उसको डाल देना चाहिए। अभी इन ग्रोइंग नेल्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। नेक्स्ट, इन ग्रोइंग नेल्स में अगर नाखून नहीं काटो तो वो जो साइड जो काटा, दिस इज द पार्ट, अगर बराबर नहीं काटो, अंदर से काटोगे तो इन ग्रोइंग ऑफ नेल हो जाएगा, यानी ये जो भाग है वो अंदर घुस जाएगा, ये अंदर भाग है घुस जाएगा, ये घुस जाएगा। तो उसको जो है बराबर काटना चाहिए, थोड़ा सा इन्हें 1 मिलीमीटर छोड़कर ये काटना चाहिए, तो उसकी वजह से ना। और हमेशा जब भी फिंगर काटो तो उसको अच्छी तरह साफ करो, कचरा निकालो, और उसको जो है सूखा करो। हेयर कट और शेविंग जो है रेगुलरली करना चाहिए। वैसे ही आईज को भी क्लीन करना चाहिए। आईज जो है उसमें अगर कोई कचरा हो तो साफ पानी से, या तो फिर कोई आई ड्रॉप जैसे कि आईटोन वगैरह रहता। नेक्स्ट, सी ऐसे पेशेंट्स को 12 मंथ, फॉर इनिशियल 12 मंथ जो है फिजियोथेरेपी इज वेरी क्रूशियल। 12 मंथ में जो होता है, 1 साल में जो होता है, वही जो है फिजियोथेरेपी पेशेंट एडेप्टिव होता है। विटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, आयरन लगता है पेशेंट को, इट शुड बी गिवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप ऑल मेडिसिन बॉटल्स और स्ट्रिप्स आउट ऑफ रीच ऑफ पेशेंट टू प्रिवेंट द रिपीटेशन और ओमिशन ऑफ डोसेस। मेडिसिन के बॉटल, स्ट्रिप्स ऑफ टैबलेट्स, इसको पेशेंट के पहुंच से दूर रखो ताकि वो खुद से अपने
अब सिस्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, रिलेटिव, तो खुद बैठ के कोई उसका टेस्ट अच्छा लगा तो लेते जाएगा, देन इट विल बी लाइक यू नो ओवर डोसिंग ऑफ मेडिसिन हो जाएगा. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल केयर बहुत जरूरी है, इसलिए पेशेंट को ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि तुम बीमार हो या तुम अभी बस नेक्स्ट थर्सडे को चले जाओगे ऊपर. नहीं, वो ऐसा बोलना चाहिए, तुम इधर जगाल, यू आर गोइंग टू स्टे, तुम तो रहने वाले. अरे अभी तो क्या है, जैसे एक कंपनी ने कहा था लाइफ बिगिंस एट 70, एंड आई ऑलवेज टेल वन कम्युनिटी, यू आर यंग व्हेन यू आर 80. सो टॉक टू देम, शेयर पजल, पजल का गेम खेलो, लाइट टीवी शोज देखो, चैटिंग करो, ओल्ड फ्रेंड से करो. उनको ये मत बोलो कि उधर वो जंग हो रही है इसराइल और पाकिस्तान में और इसराइल और फलस्तीन में, तो वो बोलेंगे कल वो बम मेरे बेड पे डालने वाला, घर पे नहीं डालेगा, बेड पे डालेगा. इसलिए इनको टेंशन देने का ही नहीं. दिस इज अबाउट द नेक्स्ट. हाँ, नाउ यू सी दिस वीडियो प्लीज. नहीं, it's very good. It's simple. It is simple. Word wise, it is simple. I have a formula, and the formula, I have a formula, and the formula has got this acronym, okay, called SHIELD. Okay. SHIELD means armor to protect yourself. S, sleep, 7 hours. H, how to handle stress, meditate. I, interaction, such as discussing with you today. Oh, In other words, engage in conversation, have relationships to discuss. And the E, what's the E, dude? Exercise. oh, okay. Every day, I either play a bit of tennis, Okay. a bit of golf, 9 holes of golf. I walk the course. I try to swim, and I do gardening. 4 things. You just do a bit of each. Okay. Every day. L means learn. Learn something. Even at this age, learn something. Okay. So now I'm trying to learn some simple technology. So Okay. for example, I learned to edit videos, Really? That's Audio. impressive. D. diet. Wow, this one very difficult for Singaporean. You have to moderate your intake of carbohydrates, Okay, low carbo. low carbo, Okay. sugar, Okay. and then plenty of fruits and vegetables. So SHIELD. Next video. I have a formula. Next slide. Next video is there, I suppose, for senior citizen facilities. याच्या पुढे नाही, पुढे शील्डच्या नंतर. यशोदा, you are not given? Yashoda, where is Yashoda? No. Okay, we'll play it afterwards. We'll start with Bedsores. Where is the next this thing? Senior citizen facilities. Yeah, that is right. That is right. First Bedsores. I will do first Bedsores, then we'll come with that. Is I don't. This reusable urine collector underwear is a blessing. Yashoda. This reusable urine collector underwear is a blessing. Medical grade, leak proof, and odor resistant. It ensures dignity and comfort for our elders. Wow, this electric patient transfer chair is a lifesaver for moving loved ones. Effortless, safe, and smooth. It's a revolution in patient care. Check out this incredible walking support tool. It's like a personal assistant for seniors, making every step safe and secure. A true mobility miracle.
This automatic robot helps with hand recovery exercises for seniors. It's like having a therapist at home. The future of elderly care is here. This foldable walking chair stick is a must-have for seniors on the go. Walk, rest, repeat. Convenience at its finest. This patient transfer lift is a game changer for wheelchair users. Easy, safe, and life-changing mobility redefined. This amazing roller pillow makes turning patients a breeze during caregiving. Effortlessly supports and eases position changes. A true caregiver's helper. This foldable hair washing basin makes personal care a breeze for seniors. Convenient, portable, and easy. It's a caregiver's best friend. I hope you have enjoyed these two videos. Now we come to a burning topic which is known as bed sores. See, all the slides which I'll be showing my patients, my treated patients, I have not taken from any book with dummy names. So we start with bed sores. Next. See, all we are going to present bed sores or pressure ulcers, and we have to understand the nature, cause, and treatment. Just to explore the importance of this topic and discover how to prevent and manage the challenge, these challenging skin conditions. Next. See, these are the types, different types. I have just showed these two types. What is bed sores or pressure ulcer? Next. See, first of all, I would try to explain how many layers of skins are there. The outermost or superficial is the epidermis, then follow is the dermis, that is below that, uske niche hypodermis, and hypodermis jo hai usme uske niche muscles, subcutaneous tissues, nerves, muscle, tendons, and bones aate hain. Next. बेड सोर को प्रेशर सोर्स भी बोलते हैं, और ये जो है प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से होते हैं, नॉट ओनली ओल्ड पीपल पे, बट जिनकी स्किन थिन होती है उन पे होती है, और दो बेड रिडन होते हैं. अल्सर्स also breach in skin or mucosa with loss of surface tissue, disintegration, necrosis, and inflammation, often leading to pus formation. Next. Next. Bed sores typically developed on specific areas of body, यानी ऐसे एरिया पे जहां पे प्रेशर गिरता है उसमें होते हैं, और पेशेंट जो इमोबाइल होते हैं उनको होते हैं, और जिनके बदन पे फ्रिक्शन होता है और मॉइस्चर होता है या इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से. नेक्स्ट. Reduced blood flow to the affected area due to pressure leads to tissue changes and ulcer formation. जहां पे ब्लड सप्लाई कम होता है ड्यू टू एनी रीजन, कारण कुछ भी हो सकता है, व्हीलचेयर, बेड रिडन, या जो है किसी और वजह से, जैसे डायबिटीज, ये जो है स्ट्रोक की वजह से ब्लड जो है सर्कुलेशन कम हुआ, उसको जो है बेड सोर्स होते हैं. नेक्स्ट. They can be at any part of the body, but they more frequently in the specific area due to pressure and friction. Next. देखो कॉमन साइड जो है वो सैक्रम, वो आगे फोटो में दिखाया जाएगा. सैक्रम आणि कोसिक्स म्हणजे टेल बोन, माकड हाड बोलतो ना, माकड हाड. नेक्स्ट. हील्स.
hips and buttocks, elbows, shoulder blades. Shoulder blades यानी खंदा, back of the head, म्हणजे टालू. टालू में उसके होते हैं जो कि ज्यादा टाइम के लिए लेटे रहते हैं और रिक्लाइन पोजीशन पर. नेक्स्ट, ये देखिए हेड के पीछे में, शोल्डर के पीछे, ऊपर की तस्वीर में एल्बो, सैक्रम, हील, ईयर, शोल्डर, एल्बो, हिप, इनर थाई, आउटर थाई, हील. ये कॉमन साइट्स है. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किस वजह से काय कारणामुळे जे ये होतात. लॉन्ग टर्म इमोबिलिटी, लाइक व्हील चेयर और बेड पे पड़े रहे. रिड्यूस सेंसेशन, जैसे डायबिटीज, न्यूरोपैथी, और न्यूरोपैथी न्यूरल डिसऑर्डर्स बहुत सारे रहते हैं. या भूखापन मीन्स खाना जो है कम मिलता है उसकी वजह से. नेक्स्ट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर में ऐसा है कि मॉइस्चर और फ्रिक्शन मीन्स रगड़. मॉइस्चर यानी पानी कहां से आएगा पेशेंट को. पानी ऐसा होगा कि कोई केयर टेकर, कोई भी, या पेशेंट पानी गिरा दे, कोई सूप गिरा दे, तो उसको पहले पीने के बाद पोंछ लेना चाहिए अच्छी तरह. या नहाने के बाद में अंघोळ केल्यानंतर ते आहे तो बरोबर सुका नाही केला, असं सोडून टाकला. फिर उसके बाद में पेशाब या टॉयलेट जो है उसको सही तरह साफ ना किया गया. एज यानी जिनकी उम्र ज्यादा होती है उसको ज्यादा चांसेस होते हैं. क्रॉनिक इलनेस यानी जिनको ज्यादा देर तक बीमारी है जिसकी वजह से वो इमोबाइल है, जैसे डायबिटीज, वास्कुलर डिजीजेस, उसकी वजह से होता है. नेक्स्ट, ये बेडसोर विद साइनस. ये केस बहुत ही अच्छी केस थी. ये मेरी 2 मिनट लूंगा आपको. ये 72 इयर्स की लेडी थी. ये बहुत अच्छी चलती थी, बहुत कोऑपरेटिव थी, और मेरी 30 साल से पेशेंट थी. सडनली अल्जाइमर्स में गई, वही जो मैं बताया पहले. तो मैं कहाँ हूं, क्यों हूं, वो भी बोलना छोड़ दी. आखिर में बेड रिडन हो गई. उसके घर वालों ने उसका बहुत ख्याल रखा. सडनली उसके एक थाई पे, पॉइंटर उस पेशेंट के रिलेटिव्स ने बहुत ख्याल रखा, अपने से ज्यादा. बट यू नो हुआ ये कि ये जख्म पैदा हुआ. ये जख्म पैदा होने के बाद ये साइनस बन गया. साइनस यानी क्या, मैं बता दूं आपको. साइनस यानी ये जख्म था, इतना साइनस था. तभी मुझको लगा कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, एंड आई टोल्ड कि इट्स बेटर टू टेक अ सर्जिकल ओपिनियन, क्योंकि साइनस ऊपर इतना था, नीचे उसका सैक बन गया. आप समझ लो, पहले ये साइनस बन गया है, ये जख्म है, ये साइनस बन गया है, नीचे सैक बन गया. और रिलेशंस को मैं बोला कि नाउ द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, सर्जन के पास लेके जाओ. क्यों? कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, पल्स में फर्क आ गया था. पल्स यानी नाड़ी. ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, रेस्पिरेशन में फर्क आ गया. बोलो अभी मोस्टली मेरे को 90% लगता है इसके नीचे सैक बन गया है. सर्जन विल कम इनटू द पिक्चर. बट व्हाट हैपेंड कि सर्जन ने भी देखा, और अल्टीमेटली दे टुक इट एंड शी डाइड ड्यू टू सेप्टिसीमिया. वेरी गुड पेशेंट. इट वाज नॉट माय मिस्टेक, इट वाज नॉट द सर्जन्स मिस्टेक. कारण
क्या होता है, ऊपर एक छोटा सा जो है दाग रहता है, छोटी सी यानी ये रहता है एक टनल, और वो नीचे जाके कितना होता है मालूम नहीं होता। वो आखिर में जब ये पूरा निकल गया जख्म तो बोन दिखने लगी पेशेंट की. इट वॉज बोन अँड नर्व्स अँड इट वेंट इनटू सेप्टिसिमिया. सेप्टिसिमिया म्हणजे सर्व जे इन्फेक्शन आहे पुऱ्या अंगामध्ये पसरला होता. नेक्स्ट, सी देर आर 4 स्टेज रहते हैं अल्सर, सॉरी बेडसोर्स के. पहला जो रहता है उसमें इनिशियल स्टेज है स्किन इज रेड, यानी चामड़ी रेड असतो, पेल और डिस्कलर्ड, बट इट इज स्टिल इंटैक्ट. देखो आप उंगली रखा हुआ है. इट कुड बी चिली और वार्म टू द टच. बहुत मोस्ट इंपॉर्टंट, या तो गरम असतो ना तो थंडा होता है, तेवढाच भाग. Currently, just the skin's outermost most layer has been damaged. ये number 1. Number 2, next, partially thickness is lost. ये देखिए ऊपर जो एरो बताया है वहां पे छोटा सा अल्सर, छोटा सा जख्म बना है, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे और साइड में चारों तरफ बढ़ रहा है. उसको दिखता है ऐसा है खराश, ऊपर से खराश दिखती है, मगर अंदर जो चल रहा है चारों तरफ से, यानी साइडवेज चारों तरफ प्लस डेप्थ में भी. नेक्स्ट, ये पार्ट 3 है. ये देखिए आप जख्म, ये जो है चमड़ी को और सबकेटिनियस टिश्यूज को, और नीचे जो व्हाइट दिख रही है वो हड्डी है. ये हड्डी है, यहाँ पे मसल है, ये इसको पूरा ये कर दिया. अभी ये इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा, इस तरफ भी बढ़ेगा, उस तरफ भी जाएगा, और ये नीचे भी जाएगा. यहां तक एवरीथिंग इज ओके, अगर साइनस नहीं है तो. नेक्स्ट, दिस इज टोटल ऐसा गड़ा बन गया है. गड़ा मीन्स भोग झालेला आहे, आणि चामडीतून जे आहे ते म्हणजे वरूनच आपल्याला ऊपर से ही हड्डी दिखेगा, नर्व्स दिखेगी. This is the last stage. Next, peculiarity of a bed sore. Location. Bed sores frequently appear when pressure is greatest. म्हणजे sacrum, heel और hip पे होता है, जहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है. Dimension and appearance, वो अलग अलग शक्लों में रहता है. ऐसा नहीं कि एक ही शक्ल में रहेगा. कोई सीधा रहेगा, कोई बांका रहेगा, कोई गहरा रहेगा, फिर वो बढ़ते जाएगा. वो कुछ कुछ गहरे नहीं रहते, वो बाद में गहरे होते जाते हैं. और वुंड्स विथ मैगट्स, ये याद रखो. वुंड्स, जो वुंड्स में मैगट्स, मैगट्स यानी किडे, ज्या जखमामध्ये किडे झालेले असतील, ज्यापर्यंत किडे निघत नाही त्यापर्यंत जखम 1 मिलीमीटर भरत नहीं. जब तक मैगट्स नहीं निकलेंगे तब तक वो जख्म नहीं भरता है. अनलेस एंड अनटिल द मैगट्स आर रिमूव्ड, एंड मैगट्स इतने आसानी से निकलते नहीं हैं. मैगट्स, एक तो पहली बात वो जो है टेरिबल स्टिंग देते हैं, बहुत बदबू देते हैं, और वो जो है एक अजीब सी कैफियत देते हैं पूरे रूम में मैगट्स हुआ तो. उसका इलाज, सब में अच्छा इलाज ये है कि ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन उसको अंदर डालो. अगर स्पेशली फुट पे है, फुट पे मीन्स अगर वो टो पे है, यानी मोठे कलंगडी वाला आहे, छोटे कलंगडी, ती कलंगडी एका छोट्या किडनी ट्रे मध्ये, किडनी ट्रे नसली तर एक जार में लेके ये ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन और विनेगर सोल्यूशन डालो, 3 दिन वहां पे रखो, 15 मिनट तक वो ऐसे ऊपर उबल उबर उबर के आएंगे. जैसे चाय में कैसा जोश आता है, सॉरी बट वो ऐसा अंदर से निकलते, 3-4 दिन में साफ हो जाएंगे. एक मर्तबा चाय, ओ सॉरी चाय, ये जो है निकल गए मैगट्स, देन वो जख्म भरना शुरू हो जाएगा. अगर जख्म नहीं भरा तो मैगट्स का नहीं, बेडसोर अगर नहीं भरा, बेडसोर ग्रो फास्ट in all the direction, and extreme cases lead to septicemia and requires surgical intervention. Next. Next. वहां पे दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है.
क्योंकि जो आदमी बेड पे रहता है उसको कहाँ कहाँ दर्द होता है, कब कब दर्द होता है, वो नहीं मालूम रहता। ओडोर अगर अपनी गलती है तो उसकी वजह से बदबू आती है, ओडोर यानी खराब वास। अगर मैगेट्स है तो आएगा, इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ सकता है, ताप येऊ शकतो, पल्स येऊ शकतो, बीपीला हात नाही लावणार त्याला, तो बीपी नंतर रेस्पिरेशन वाढेल. नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सब में पहले प्रेशर निकालो. फॉर एग्जाम्पल अगर बैक पे है तो इजिएस्ट वे है कि नहाने के बाद उसको सूखा करने के बाद, त्याला सुका केल्यानंतर पाठीवर जे जखम असतात त्याला इडिकोनॉल लावा. इडिकोलॉन चीप आहे. युडिकोलॉन लावायचा आणि त्याला सुकून द्यायचं नाही. इट शुड बी डॅम्प. त्याच्यावर कॅन्डिड किंवा नायसिल पावडर लावा. नॉट नेसेसरी दैट द पाउडर शुड बी फ्रेग्रेंट, इट शुड बी कंफर्टेबल. कारण जो खुशबू देते हैं वो पैसे भी खींचते हैं अपने पास. और जब भी पेशेंट को एक आध मरतबा ऑलिव ऑयल आता, ऑलिव ऑयल, उसका मसाज करो. ऑलिव ऑयल में ऐसा है कि इट हैज गॉट 70 बेनिफिट. 70 त्यामध्ये गुण आहेत एका धर्मामध्ये. के काही काही मेडिसिन मध्ये पण लिहिलेलं आहे की 70 बेनिफिट्स आर देयर. इवन यू कॅन टेक इट, यू कॅन अप्लाय इट, मेनी थिंग्स आर देयर. फिर नेक्स्ट, position of the patient has to be changed every 15 minutes for sitting patient. 15 मिनट के लिए जो बैठे हुए पेशेंट उनको चेंज करना चाहिए. बेड में जो है जो उठ नहीं सकते, जो उठ शकत नाही, त्याला जे आहे दर अर्धा घंटा 30 मिनट्स टू 60 मिनट एक लैटरल से बीच का, यानी एक साइड से एक करवट से सीधा उताना, फिर उसके बाद में दूसरे साइड करने का, ऐसा आधे आधे घंटे से करते रहो. और अगर बेड सोर नियर टू टेल बोन है या हिप बोन है या स्काल्प है तो जैसे मैं ड्रेसिंग बताऊंगा वो करके रिंग या रिंग के अंदर वो वुंड रखो, और या इन्फ्लेटेड ओल्ड स्कूटर ट्यूब रैप्ड इन सॉफ्ट क्लॉथ सो दैट प्रेशर कैन बी ईज्ड. नेक्स्ट, देखिए ये जो है फॉरेन से लिया है. इसमें क्या रिंग आती है. हिंदुस्तानी अपन गरीब लोग है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. तो वो जो है इसका जख्म टेल बोन पे है. मैंने ये इतना महंगा इलाज करने से अच्छा है कि स्कूटर की जो ट्यूब आती है उसमें हवा भरने की, हवा है ना, एकदम हवा नहीं भरने की कि वो फुट जाए करके, गुड, उसको जो है मलमल से कापड़ा नहीं उसको रैप करने ताकि वो गरम गरम नहीं रखे. और उसको जो जहां पे ड्रेसिंग किया है वो ड्रेसिंग उसके बीच में रखकर, जैसे ये जख्म है ये उसके बीच में बराबर रख के वो प्रेशर से वो ऊपर रहेगा. अल्टिमेटली द पर्पज इज सॉल्व. जिसको सर को लगा है, ज्याला माथेला लागलं तर माथे खालती उशीच्या ऐवजी जे आहे एक हॉर्स नेल जो है तकिया भी आता है, बट दैट इज एक्सपेंसिव. कॉमन आदमी के लिए वो भी मुश्किल है. तो उसके लिए भी ट्यूब लो, उसको रैप करो, हवा भरो और करो. और थोड़े दिन से हवा देखते रहे ना तो पेशेंट जो रहता है वो बहुत शान रहता है, उसको हवा निकालते हैं. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट. सी केयरफुल क्लीनिंग, अच्छी साफ सफाई करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देना चाहिए. अगर जरूरत है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो करो. फिर उसके बाद में जो है मैनेजिंग पेन, अगर पेन है तो NSAID यानी नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं. और अगर जख्म है तो वो भर नहीं रहा है तो बाजू वाला जो ये देखो, यानी जख्म, फॉर एग्जांपल दिस इज, ये बीच का जख्म है और साइड में आप यहां देखिए मेरे पास, ये साइड में जो स्किन है वो हेल्दी नहीं है, ये वाइट है, वो डेड स्किन रहता. कोई डेड स्किन जे आहे ती कधीही जखम भरणार नाही. तो एक साफ स्टरलाइज छोटी सी ये ले लो सीजर. अगर दिल मजबूत है तो उसको आस्ते आस्ते निकाल दो तो वो साइड से भी भरना शुरू हो जाएगा.
नेक्स्ट, हाँ सप्लीमेंट। ये देखिए जख्म की ड्रेसिंग मैं बताता हूं आपको, उसके साथ में विटामिन देना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन और omega-3 फैट एसिड्स एंड एनी अदर थिंग हैज टू बी स्टार्ट। कुछ दवाई अपने खुद से स्टार्ट मत करो, ये विटामिन ठीक है दे दो क्योंकि विटामिन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मेडिकल एडवाइस क्या ये करो। नेक्स्ट, अभी देखिए ये जो दो ऑइंटमेंट हैं ये मैंने ट्राई किया है, एक एलोपैथिक है, लेफ्ट में सिलोडर्म, और एक जो है कैलेंडुला विच इज होम्योपैथिक समथिंग आयुर्वेदिक बिकॉज इट्स फ्रॉम मेरीगोल्ड फ्लावर्स। हे दोन ऑइंटमेंट को मी आज एवढ्या वर्ष ट्राय केल्याने 70% माझे पेशंट चांगले झालेले आहेत, 70% रिकव्हरी हुआ है, 60 to 70%. नेक्स्ट, हाँ, now this is a video, please see this video very carefully. प्ले करना। यशोदा, she's afraid of what? She's afraid of wounds. Please watch this dressing video very, very carefully. Please. This is the patient. He has got bed sore on the back side. This lady who is doing it is a housewife. We have taught her. Now, please observe. She is cleaning the wound. It was big, now it has come small with sterile gauze. And of course, sterile gloves, disposable. This. She is cleaning with normal saline. Now she is using liquid betadine. Right. Now she is using the calendula tube in the center of the wound. That is the pink. म्हणजे जिकडे लाल असते तिकडे कैलेंडुला लावते. Means सेंटर में कैलेंडुला ट्यूब लगाएगी, वो लगा चुकी है, सॉरी। और अभी ये जो ले रही है सिलोडर्म ट्यूब ले रही है। सिलोडर्म हैज वो जो है साइड में लगाने का है जहां पे नॉर्मल स्किन रहती है। See how delicately she is putting, applying it very, very delicately. हाँ, नाजूकपणे लावायचे असते, म्हणजे आत गेला तर काय हरज नाही, पण यू सी कैलेंडुला एक्ट्स फास्ट इन द सेंटर, दैट इज एन ओपन वुंड, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यूब से, सॉरी स्टेराइल गॉज से उसको बराबर फैला रही है। त्याच्यानंतर तोच गॉज, स्टेराइल गॉज इज इम्पॉर्टंट। त्याच्यावरती एक स्टेराइल गॉज पॅड लावला,
स्टिकिंग प्लास्टर, अतः स्टिकिंग प्लास्टर जो है हर रोज एक जगह नहीं लगाने का ना, तो हर रोज एक जगह लगाएंगे तो उधर भी जख्म आना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग जगह बदल बदल के लगाना. स्टिकिंग प्लास्टर जे जागा बदलून लावायचं असतं दररोज, कारण हा एक दिवसाचा किंवा 2 दिवसाचा अफेअर नाही आहे. बेडसोर को घर वालों को ही सिखाना पड़ता है. एवरी डे दे कैनॉट गो टू द डॉक्टर, दे कैनॉट कॉल टू अ डॉक्टर बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. स्टिल स्लाइड्स आर देयर. अजून 2-4 नाही नाही नाही, हे शेवट अजून आहेत ते व्हिडिओच्या नंतर. हा, हे जे आहे 2 स्लाइड आहेत. नाही, हे बंद नाही केलं. हे 2 स्लाइड आहेत. देयर आर 2 स्लाइड्स. आई हैव जस्ट पुट द नेम, बट ऊपर का जो है दैट इज बिफोर एंड नीचेचा जे आहे after starting the treatment. Next. You see, one above is 6 July. You see 6 July's wound. Can you make it clear, please? With all that tags. And downstairs is 13th. After 13 days, how small the wound has become. Next. See, above is before and below is after. Now, if you see the length of the wound, the depth of the wound, you cannot see, but length has decreased. See, the wound is supposed to be healed from all the sides, from the depth and the size also. Next. See now how it is becoming. You see, it was a fish. The fish is shrinking sidewise and lengthwise. Next. See, conclusion is understanding the bed sore, early detection and prevention, comprehensive care, and involves repositioning, skin care, nutrition, support surfaces, and education. Next. Treatment options vary by severity. Supplements can complement prevention, and treatment collaboration between healthcare professional, patients, and caregivers is vital. Next. This you have already seen. Okay. This ends my talk. I'm thankful to all of you. If any question from the medical fraternity or from the people who are on Zoom, they're welcome. This reunion. See, the thing is that I am trying on this. I will tell you that. Now I have not reached to a conclusion. So the thing is that this I am very much confident which I have given. See, the केले का जो पत्ता रहता है, केले के झाड़ का पत्ता, उसको साफ करने का not with Dettol. It is with simple soap and water. Make it clean. त्याची लस जी असते, लस ती निघाली पाहिजे. And then you can put it. But one thing in my 36 years, I'm not talking about bed sores. Means सरल ये सांगते, मैं साफ बोलता हूँ, any wound, whether it is the incisional wound, whether it's a wound due to fall or some other. See, if you keep it open with the ointment, it heals fast because nature is the best. Nature is the best cure. हाँ, इसका मतलब I have seen people कि त्यामध्ये ते सिंदूर घालून आणतात, त्यामध्ये चायची पत्ती घालून आणतात. That is to take out those foreign body. Chai ki patti is very, very difficult to be taken out. Sindoor or anything, any damn powder you take.
You don't make it. If you see the bleeding, just put a pressure and bring it. Or put an ice pad so that you can bring to the hospital. Act as a brace. Yeah. But you see, I have not tried and I'm not confident, so I'm not telling. Next time maybe. No, I have tried this combination. I am in the process of that. But the problem is that केले का पत्ता लेने के बाद उसके ऊपर कोई इंसेक्ट नहीं रहना चाहिए. अच्छा मैं तो कर लूंगा. वो घर पे जाने के बाद में वो एक केले का पत्ता उसको इट्स नॉट साउथ इंडिया, उसको 4 टुकड़े करेंगे और उसमें कई इंसेक्ट आया तो वो इट इज लाइक एन एडेड इन्फेक्शन. It is like an added infection. Hey, anybody wants to ask on the Zoom? It's finished. Zoom. Anybody wants to ask? Huh? Then Zoom. Zoom. If anybody wants to ask, because there's them. Anything from here? Thank you very much. Doctor, I have a question. I mean, not a question, but would like to ask. Hello. Yeah. Yeah. Say a person above 80 years and not able to move, in the sense it's not a bedridden, but then not changing the positions. I mean, not comfortable to change the positions, is lying on the back. And as you said, like, every 15 minutes or a half an hour, we have to change the position. So in this case, what is the remedy or what the family should do in such cases? And there is no bed source, but then to prevent it. See, for prevention of bed sores, 80 plus, whatever is there, if somebody doesn't have and he is in senses or not senses, physiotherapy. Physiotherapists can train the people in the house. I mean, house Okay. people. I mean, like flexion of knees, extension of knees, then similar of the arms, and slowly, mind you, make him sit, not pulling it. तो pulling करने के बाद में एक हाथ में आ जाएगा, वैसा नहीं. So you can avoid that, and that will actually give a good this thing, circulation. Circulation will be there, and future also there will not. And of course, vitamin, all sort of vitamins like vitamin E, vitamin A, vitamin D should be given, because this is the age when the vitamin deficiency is there. But it's a good that 80 years not having this thing, I mean, any bed sores. He can have a normal life. And of course, the same thing, the bed sheets should not be soiled by any cause or something. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Anybody? Yeah. Yeah. See, silver sulfur triazine, as people who are then in Saudi on this thing Zoom, they will be having a better idea. When you go in sun, the cracks are there. When you go in the cold, extreme cold, US people, you get a cracks. So clean the foot, make it dry. That is important. And before the cracks are widened, you put silver sulfide. Say, I think this Saudi people will agree that when they go to the mosque, which is a long distance, the holy mosque. So what happens is, before going, they put usually socks. Before that, they apply. And it has to be between the webs also, webs of the toes. Because, in these patients, I'm talking of elderly, either
कुछ क्रैक होगा तो पेशेंट इज नॉट गोइंग टू टेल यू. You can say the people who are bedridden is as good as a veterinary practice. Pediatric is also veterinary practice. They understand, but they cannot say. Yes, anything else? Yes, I have a query. डॉक्टर, अगर आपने जैसे कहा कि अगर रिक्लाइनिंग पोजीशन में या लेटा हुआ पेशेंट होता है तो उसको बेड सोर्स हो जाते हैं, और ड्राइनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी नहीं रहना चाहिए, पसीना नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम ऑयल अप्लाई करें ऐसे पेशेंट को तो उससे कोई फायदा होगा? और दूसरा ये कि अगर रिक्लाइनिंग पोजीशन में या लेटे हुए पोजीशन में है और अगर उसको सहारे से खड़ा किया जा सकता है, तो दिन में कई दफा उसको अगर खड़ा कर दिया जाए, थोड़ी देर खड़े रहे सहारे के साथ और फिर लिटा दिया जाए, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? Can you get me? Yeah, yeah. Very. If you want, you can call me on my this thing. What is that? Wi-Fi phone or Botim or whatever. Yeah, ask her to type in chat box. डॉक्टर, व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि अगर आपने जैसे कहा कि पेशेंट रिक्लाइनिंग पोजीशन में होता है या लेटी हुई पोजीशन में होता है तो उसको बेड सोर्स हो जाती हैं, और उसके अलावा आपने कहा कि ड्राइनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी या पसीना जो है वो रहना नहीं चाहिए जिसकी वजह से बेड सोर्स हो जाती हैं। तो डू यू थिंक कि अगर ऑयल अप्लाई किया जाए ड्राई करने के बाद, और अगर पेशेंट इस काबिल है कि उसको खड़ा कर दिया जाए और थोड़ी देर खड़ा रखें उसे दिन में कई दफा सहारे के साथ, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? इन्होंने बेड सोर्स के सिलसिले में अगर बेड सोर्स नहीं होंगी इस तरह करने से? See, madam, the thing is that main aim is one has to be mobile, right? So अगर patient लेटा हुआ है उसको bed sores नहीं है, that means it's a good sign. वो अगर खड़ा रहता है, खड़े रहते वक्त में भी उसको जो है 2 आदमी लगेंगे अटेंडेंट दोनों तरफ से पकड़ने के लिए। अगर वो चलता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो वो खड़ा रहता है या बेड के किनारे बैठ के पाँव हिलाता है, पाँव में हिलाता है मीन्स स्ट्रेट करता है, नजदीक लेता है, उससे बेड सोर नहीं होंगे। एंड अगर पाँव हिलाता है तो उसको जो है आप देख लीजिए लोअर एक्सट्रीमिटी को वो मोबाइल कर रहा है, प्लस तो बैठता है तो वो जो टेल बोन है उसकी भी मोबिलिटी हो जाती है। बट वन थिंग इज दिस, माई प्रैक्टिकली आई हैव सीन दैट खड़ा रहता है ठीक है, बट यू हैव टू टेक केयर। ऐसा नहीं हो खड़े रहने में कहीं उसका जो है अलाइनमेंट डाउन हो गया तो गिरना नहीं चाहिए। आप समझे मैडम? कैन यू गेट मी? अगेन शी इज आउट। हेलो, कैन यू गेट मी? Yes, I get you. Thank you. थैंक यू, बाय बाय।
Anyway, chalo, thank you. Thank you, Dr. Numan. Really appreciate a very interesting information that you've shared. खूप खूप आभारी आहोत आम्ही ILCI तर्फे आणि सगळे जे आता जॉईन झाले झूमवर आणि सगळी मंडळी आपली आस्थामधली आलेली डॉक्टर रायकर, मिस्टर तुकाराम, डॉक्टर भाविका आणि सगळे जण थँक्यू सो मच. मिस या Ms. Almitra Patel, ma'am, would you like to say a few words? We appreciate your help in making this possible. That a hernia patient in Breach Candy with a special nurse came home with a bed sore and the hospital couldn't deal with it. But Dr. Tungekar's calendula and xyloderm worked very fast and it has saved so many of them. There is an organization in Kolhapur called Sahas. I think one of their members is present here. So on telemedicine, they are sending photos of the wound to Dr. Tungekar, and by telemedicine, he is guiding them and has cured so many bed sores of their patients. That's really wonderful. Yes. Thank you, madam. Actually, sorry, I forgot to tell you. Yes, you are right. That patient from Bridge Candy, for the bed sore, he spent around 6 lakhs. And calendula, I don't know what that present the cost is. And xyloderm, as twice he had it and twice he was relieved 100%. But thanks to everybody, Dr. Mashalkar, Mrs. Patel, and the Anjali and Dr. Aikar, and all the people, they are very nice. They are very cooperative. Thank you very much. Bye-bye. Mr. Darby? I don't know that. Hello. Is there anyone who has to ask a question? Yeah. No, I have asked. I'm fine. It's more informative. There is no question as such right now. But Dr. Tungekar, yes, of course, it's not a question. If someone is running the program with the elderly people and there is no hospital care services at home or hospice service or in such cases, I think you mentioned about the physiotherapy is the most preventive method. Can help the families. So, do you think it's a strategy for the organizations working with the elderly people? Focus more on the physiotherapy to just prevent these bed sores? Yes, physiotherapy means. Can you get me? Yeah, I can hear you. See, the thing is that physiotherapy, it has to be taught at home because I'm talking in general, irrespective to ILC or other. It has to be, the family people should be trained in this way, that it's a long procedure. Okay. So it has to be trained, say 10 days, 15 days, something, the physiotherapist goes or the people come to her and just, they train it how to do it. And things work out, because physiotherapy you require for months and years also. Yeah. But So, usually the physiotherapists have their regular physiotherapy. We are talking more about the bed sores, and considering the bed sores, there must be some other way or particular method, to have a physiotherapy. I don't know. I'm just clarifying my doubts. You can, have that way. If every physiotherapist who goes to the bed, so there are specific exercises they show to the patient's relative and to the patient also. Okay. That you have to do this, psychologically he should say, हाँ ये आया था मतलब ये है कि ये वो सिखा के गया तो इसने मेरे को ये करने का है. And physiotherapy, main purpose of physiotherapy is circulation of the blood is kept intact, and there's no locking of the joints. That is important. Okay. Yep. Okay. Thank you. Mrs. Raje,
I just, I mean, since we are discussing the bed source, I have come up like, I have mainly work in the rural areas and the slums. And since we are talking about the bed source, and this is something completely ignored area by the lot of NGOs, and then the people are like, working with the on various developmental issues, but elderly people is something which is ignored. I'm sure you maybe agree. Yeah. In, so once there is a bed source, I mean, doctor mentioned about the lot of treatments available, but it's very costly. In such cases, what you suggest, or doctor can suggest, organizations who has a limited resources working in the rural areas or the slums areas. I mean, this is a challenge to, as far as treatment concern, and hence I was more asking about the preventive method. But yes, treatment is also important. So this is very challenging area. So I find I don't have any options or a solution for this. And especially when we are helping NGOs or the community-based organizations, this is the unanswered questions for me. I mean, there may be some solutions available. Yeah, I think Dr. Numan, or would you be able to? See, we discuss, I and Madam discussed the roadmap of many things, right? So I think that was not only physiotherapy, we have to see the orthopedics also in all age, right from pediatric to the senior most person. Then, sorry, some other things were there, because see, that has to be there, roadmap has to be there. Unless and until the roadmap doesn't come up into function, I think that it is going to take time. It's a time consuming affair, but it is going to work out very drastically. I mean, it will come out. It's like that. I think, Mr. Darvi, we need to think about solutions of how to get people from underprivileged classes access to such kind of facilities that Dr. Numan has spoken about. So yes, that requires some deep thinking. Dr. Raikar, would you like to? Yeah. He's from Kolhapur. This. Acha. Okay. Hello, sir. Myself, Dr. Raikar. Specifically, you asked about when you are working with rural sector with NGOs and all. Probably people do not have the access to the healthcare. So in such cases, we need to have awareness amongst the primary healthcare center workers, and probably some workshops to create awareness among the family members of elderly is very important, because to prevent bed sore, it's very important to keep the person away from the bed. And as sir has mentioned, there are other treatments as well as the other modalities like, changing positions, diet, medications, the control over the comorbid conditions. All those factors are very important. Moisture control. So creating awareness is very important. Probably you can be in touch with Anjali Raje madam, and Numan sir can have such awareness sessions to the NGO people. So in turn, they can go and teach or give information to the families in rural areas. Thank you. Dr. Aikar, very nice of you. One more thing I would say, see, when NGOs are there, people, they don't, as Shield has told, there should be a walk to all age. See, one patient comes to me with, दो सीट लगता है उसको बैठने के लिए, मीन्स टू, इतना वो हेल्दी है, खाते पीते घर का है. And then I ask him that how much walk do you do? So he says daily 10 kilometers. I was surprised. 10 kilometers means something is wrong. Either the kilometer is wrong or he is telling you. उसके बाजू में एक बच्चा रहता है, बोले डॉक्टर साहब ये 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे जाता है. Anyway, I think awareness has to be given. Thank you much. Yeah, thank you. Yeah, thank you Excuse so me, much. one question, please. Yes, please. Yes.
Actually, when you said the prevention, when everybody knows that prevention is better than cure, so I think these sort of lectures and awareness should be held in rural areas, especially in health clubs and in hospital. They should arrange some lectures like this so that the common people can understand the problems of this bed sores and all. So before developing a deep complication, one can take good care of the old elderly patient. So I think it is very much important that these awareness should be there, as doctor said. So is there anything, any plan just for informing or to keep the sessions in rural areas from the hospitals or health clubs? If you can do something like in this regard, so it will be better for everybody. Yes, thank you, ma'am. Your suggestion is well taken. And just like Mr. Darvi said, we will be thinking about how we can use Dr. Numan's voluntary services as he's been offering to many people, many NGOs. Let's see how we can take it further through telemedicine or through actual programs. Yes, we'll be definitely be in touch with sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, thank you, everyone. Good day. Take care.